जय गुड इवनिंग। जीजा जी ऑडिबल नहीं है, म्यूट है म्यूट। हम्म। नहीं, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा। वरुण आई थिंक है, म्यूट कर रखा है म्यूट इन्होंने। हाँ हाँ। म्यूट तो नहीं है, ठीक है। लेकिन आई थिंक उसका म्यूट तो नहीं है, बट स्पीकर नहीं काम कर रहा हाँ, वो। अभी अच्छा अच्छा। अभी अभी तो ठीक अब हो कर गया। रहा है। हाँ हाँ, हाँ, अब कर रहा है। अब आ रही है। हाँ, वो मेरा वो क्या नाम है, हेडफोन में दिक्कत है। चलो मारो बोलिए। अच्छा। हाँ, तो वी विल स्टार्ट है। हाँ। यस यस। जी आई थिंक वी विल स्टार्ट फ्रॉम 14। नहीं, 21। आई आई थिंक ट्वेंटी ट्वेंटी श्लोक वन 21। ट्वेंटी वन 21। अच्छा, वो टेक्स्ट है ना। 21 करूँ? हाँ, हाँ, चैप्टर 2। चैप्टर 2। श्लोक 21। हाँ, अच्छा जस्ट लेट मी डू द गुरु वंदना है। जी। जब तक आप ढूंढ लीजिए। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वितं स्वाद्भूतं परिजन सहितान् कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविश्रा खान्विषांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु गदत जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तृणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पातरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 1.2.21। यस 21। जी। लेट मी रीड इट। हम्म हम्म। वेदा विनाशिनम नित्यम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति हंति कम। हम्म O Parth, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable kill anyone or cause anyone to kill? Everything had its proper utility, and a man who is situated in complete knowledge knows how and where to apply a thing for its proper utility. Similarly, violence also has its utility, and how to apply violence rests with the person in knowledge. Although the justice of peace awards capital punishment to a person condemned in murder, the justice of peace cannot be blamed because he ordered violence to another person according to the codes of justice. In Manu Samhita, the law book for mankind, it is supported that a murderer should be condemned to death so that in his next life he will not have to suffer the great sin he has committed. Therefore, the king's punishment of hanging a murderer is actually beneficial. Similarly, when Krishna ordered fighting, it must be concluded that violence is for supreme justice. And thus, Arjun should follow the injunctions, knowing well that such violence committed in act of fighting for Krishna is not violence at all, because at any rate the man or rather the soul cannot be killed. So for the administration of justice, so called violence is permitted.
A surgical operation is not meant to kill the patient but to cure him. Therefore, the fighting to be executed by Arjun at the instruction of Krishna is full with full knowledge, so there is no possibility of sinful reaction. Here you see Krishna, ये अब आपने Arjun रिकॉर्डिंग had स्टार्ट कर given. दी है? हैं? रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी? हाँ हाँ करी हुई है. यस. ओके, बस ठीक है. हाँ, यस यस, गो अहेड प्लीज, गो अहेड. Yeah, actually, what I was going to say is that Arjun was bewildered. So he had given all kinds of arguments to Lord Shri Krishna, that killing is not good and all that. On those lines, doing violence is not good. I mean, how can I kill all these people? How can I make all their wives widow and all that? Something like that he had said. Acha, here Lord Krishna is very clear that, you see, as per part of his prescribed duty, not only as per part of your prescribed duty you are supposed to be fighting, but when you are soul who can neither be destroyed nor you can kill anyone, so where is the question of your killing? You have to simply carry out the injunctions of the Supreme Lord. Bas. That is you see, actually everyone, including Arjun, forgets his constitutional position, that we are part and parcel of the Supreme Lord. We are his अंश. We are his अंश. And that means we have to follow the orders of the whole. Not only that whole which is all opulent, all powerful, who can give you anything, who is sitting in your heart. So where is the question of not following his injunctions? So this is what Lord Krishna is very, very clearly trying. I mean, you see, he is not like an autocrat king. The Lord is not like an autocrat king, that he simply orders. And when there is, he's trying to convince his devotee. That is the beauty of the Lord Krishna. He is the eternal, सर्व कारण कारणम. जब हम लोग इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे ना, that everything emanates from him and he is the reason of why everything is moving and working and doing anything, then everything, I mean, then you will naturally start following such a person. जैसे वरुण कहते नहीं है that he is a person. That is why he is a person. हम लोग की नेचुरल पोजीशन ही यही है. How can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable, kill anyone or cause anyone to kill? Although Prabhupada in his purport, he has taken into another direction, that such killing is a mercy killing actually. He has taken in another direction that it is not bad. He is trying to convince, Prabhupada is telling in that direction that, see, this is not, this is as per the Shastras. जो आपका वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से, you have to fight. You are a Kshatriya, you have to fight. This is what I get from here. Actually, see, if you see it minutely from the previous verses, why Lord Krishna had to define the soul in such great detail? Why he had? Because he knows that the human mind will start questioning that if a man drowns, then his soul drowns.
तो उनको ये कहना पड़ा, पता नहीं आगे आएगा बाद में आएगा कि ना, तो पहले आ चुका है। neither it तो can be burnt, nor it can be but drowned, nor it can be blown away by air, like that. So why he had to define that soul is so small, 1,000 time of the hair, and then that part again divided by 1,000 times. Yeah, 100 times, 100 times first time, and then ultimately 1/10,000 of the parts, the soul's dimension has been given here. Why he had to give that? Jay, one more point is there. I think in this shlok, God is also defining sometimes whatever action is there, if it is not correct according to us, but it may have some higher meaning which we are not able to understand. So if anything is happening, just try to understand the intention. What is the intention? What is the outcome of that particular thing? I think so. You see, that is why the Prabhupada and Lord himself uses the word injunction. That is why the word injunction has, unfortunately, we are not well versed in Sanskrit. ये तो बहुत, it is a great mercy of so many acharyas who were well versed in English also, that who have given this translation, or who gave the translation in Bengali or in Hindi, and which got translated into English. Why we don't understand Sanskrit is absolutely, we just can't make head and tail of it. So you see, that is why the word injunction का जो original English वो Sanskrit word होगा ना, उसका और भी deeper meaning होगा. It is not just an order, but it must be having some other connotation, मतलब बिल्कुल exact connotation, you know. Just like Shraddha has got no exact either Hindi or English. No, I know of none. Dharma is, there is no exact translation of dharma. Because in their culture there was no dharma. नहीं, because actually ना, क्योंकि जैसे जो श्रद्धा है, like श्रद्धा, so we know it because we have seen it in action. It's like a particular set of actions that we call it is Shraddha, particular set of emotions we call Bhav. So there is no translation in other cultures for that. जैसे कि तो the closest comes is कि mellow. Mellow, रस के लिए mellow. रस के लिए mellow. Whereas जैसे कि हमारे उसमें there is very, जैसे अब आप जब when you eat a mango, so you enjoy that. That is ras. That is one instant of a ras, right? But वो दूसरे cultures में उसका वो नहीं है connection लोगों को. So that's why. चलो आगे वाला पढ़ो. This one more thing कि भाई this give death also another meaning, that death is again only of the body. It is not of the soul. That people, it is not of the body soul. gets destroyed. You do not kill the soul. So where is the question of this thing? You are killing somebody. That somebody is never killed. He is eternal. That is also very much correct. Yes. Text 22. Yes. You want me to read it? Okay. Text 22. Vasamsi jirnani yatha vihaya navani girnati naroparani tatha sharirani vihaya jirnani anyani samyatti navani dehi. As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. Purport. Change of body by the atomic individual soul is an accepted fact. Even the modern scientists who do not believe in the existence of the soul, but at the same time cannot explain the source of energy from the heart,
have to accept continuous change of body which appear from childhood to boyhood and from boyhood to youth and again from youth to old age. From old age, the range is transferred to another body. This has already been explained in the previous verse 2.13. Transference of the atomic individual soul to another body is made possible by the grace of the supersoul. The supersoul fulfills the desires of the atomic soul as one friend fulfills the desire of another. The Vedas, like the Mukunda Upanishad as well as the Shvetashvatara Upanishad, compare the soul and the super soul to two friendly birds sitting on the same tree. One of the birds, the individual atomic soul, is eating the fruit of the tree, and the other bird, Krishna, is simply watching his friend. Of these two birds, although they are the same in quality, one is captivated by the fruits of the material tree, while the other is simply witnessing the activities of his friend. Krishna is the witnessing bird, and Arjun is the eating bird. Although they are friends, one is still the master, the other is the servant. Forgetfulness of this relationship by the atomic soul is the cause of one's changing his position from one tree to another or from one body to another. The Jiva soul is struggling very hard on the tree of the material body. But as soon as he agrees to accept the other bird as the supreme spiritual master, as Arjun agreed to do by voluntary surrender unto Krishna for instruction, the subordinate bird immediately becomes free from all lamentations. Both the Mundaka Upanishad 3.1.2 and Shvetashvatara Upanishad 4.7 confirms this. Samane vrikshe purusho nimagno nishaya shochati muhya manaha drushtam yadi pashyati anyam isham asya mahimanam iti vitashoka. Although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruit of the tree. But if in some way or other he turns his face to his friend, the Lord, and knows his glories, at once the suffering bird becomes free from all anxieties. Arjun has now turned his face towards his eternal friend Krishna and is understanding Bhagavad Gita from him. And thus, hearing from Krishna, he can understand the supreme glories of the Lord and be free from lamentation. Arjun is advised herewith by the Lord not to lament for the bodily change of his old grandfather and his teacher. He should rather be happy to kill their bodies in the righteous way so that they may be cleansed at once of all reactions from various bodily activities. One who lays down his life on the sacrificial altar or in the proper battlefield is at once cleansed of bodily reactions and promoted to a higher status of life. So there was no cause for Arjun's lamentation. इसमें एक जो चीज ये बड़ी इम्पोर्टेंट है विच आई वांटेड टू शेयर कपल ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे लगा एक मैंने कुछ दिनों पहले आई हैड शेयर्ड अ वीडियो ऑफ अ साइंटिस्ट आल्सो हु वाज who was at least very humbly and honestly sharing the great limitation of science. He was being very honest. They said that they know what are the building blocks of the cell, of one individual cell. They know all the building blocks, yet they even are able to bring them to put them in one place, but they are not able to make the cell be alive alive in a way like cell starts acting, cell starts working. They cannot do it actually because without that is where the supreme soul, the supreme paramatma, he when actually in Upanishad, in the Srimad Bhagavatam, we will read Lord enters into each jiva, then it becomes animated. So wo I wanted to share because science has huge limitations, huge. They do not know the source of life. They do not know how life actually starts. And people who are humble, who are honest scientists, they say that.
yet people do not accept. एक तो वो I wanted to share. अच्छा, दूसरी चीज about these two friends, the two birds. This is very very important because right now we are see, it's a very clear distinction कि the jiva, he is looking at the fruits, he is looking at all the activities and attached to the fruits. So therefore, it is anxiety, morose, lamentation, depression. These are natural things. Whereas the Supreme Soul, the other friend, he's a friend, and he is just witnessing because he is already Satchidananda. So he is full of knowledge, bliss, and eternity. So he does not want to participate. He's just watching the jiva. अच्छा, ये लाइन मुझे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. The transference of the atomic individual soul to another body is made possible by the grace of the super soul. In what way? The super soul fulfills the desire of the atomic soul as one friend fulfills the desire of another. अब अगर if you have such desires, I want to enjoy sex, I want to enjoy food, I want to enjoy these sense pleasure, so you will get that type of a body. Maybe an animal body is better for you. It depends on your propensity. Same concept. If you desire, I want to be with God, I want to serve God, then God will give you the spiritual body, and you can go back to Vaikuntha Dham, which Lord Krishna has said. The principle is the same. That is what he is absolute. He is absolute in satisfying your desires. If you desire sense pleasure, he will give you that body. If you desire spiritual bliss, then he will give you that. But you have to desire that spiritual bliss. And how? Then you have to clear. I think it's a process of cleansing, purification. That is when you will start appreciating spiritual bliss, spiritual happiness. So ये, that is why I found very very important. That is why अभी तो क्या है कि you have to, we have to learn only by this moroseness, lamentation, and pain. Then only we, kuch log usme bhi, they just keep on adjusting. But we are very fortunate that you start going towards the Lord. You switch to the Lord. अच्छा, ये चीज एक और मुझे, I wanted to share that this principle is applicable anytime. See this, the if in some way or other he, the jiva, turns his face to his friend, the super soul, the Lord, and knows his glories, at once the suffering bird becomes free from all anxieties. अब अच्छा, इसमें क्या करें भाई? You have to, it's not like हम लोग का भी क्या phase है, we sometimes switch to God, then come back, switch to God, come back, switch to God, come back. When we switch to God, we experience no more moroseness, no more anxiety, but we again have to come back because we have to do our duties also. The more we try to bring God into our life, God into our duties, God, connect our duties to God, then I think that is the way to get out of this. क्योंकि ये जो बैक एंड फोर्थ हो रहा है ना, मतलब अभी हम लोगों के साथ आई कैन सी इट हैपेंस बैक एंड फोर्थ. कभी कभी हम जैसे बाय रीडिंग, बाय दिस चैंटिंग, we turn to God, and then we don't have any anxiety, but then we again come back to our life, फिर anxiety, moroseness. तो ये मुझे ऐसा फील. Actually, Radha, you want to say something before I say? जी, मुझे ये लग रहा है कि जो ये सेंटेंस है, although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruit of the tree. But if in some way or the other he turns his face to his friend, who is the Lord, and knows his glories at once, the suffering bird becomes free from all anxieties. तो जी बस इसमें ये चीज लग रही है कि जो हमारी आत्मा है, यदि कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि हम अटेंशन जिधर रख रहे हैं उस तरह की चीज हमको मिल रही है. अगर हम अटेंशन जो है वो जैसे खाने में, पीने में, सेंसेस में है, तो उसके कॉन्सिक्वेंस जो है वो उस तरह के होंगे. और जब हम अपने सोल, अपने अपने ओरिजिनल नेचर की तरफ जब हम टर्न हो जाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस वैसे होंगे. भाई तुम दोनों जने एक ही बात कर रहे हो, मतलब एग्जैक्टली वही जो प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं
जी. See why he has brought this, the two birds thing here. Hmm. Whereas the original shloka is about the change of body. Hmm. It's about Vanshansi Jivata, just like he has given an example कि जैसे आप अपने as you change your old clothes you change into new, and so the soul changes into another body when the old body becomes useless, torn, it can't be used anyway. But he has brought this that two bird theory. एंड यू सी मेरे को जो ये लगा मैंने भाई ये इस चीज को हम काफी दिनों से इसको जानते हैं कि मैं दिस इज वेरी वेरी करेक्ट है ये कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही हमारे उसके अंदर में एक पेड़ पे दे आर सिटिंग ऑन ए ट्री. यू सी वेरी करेक्ट. यू बोथ हैव आल्सो सेड कि either he has to look towards Maya or he has to look towards the Supreme Lord. अच्छा, as soon as he looks at Maya तो फिर तो कर्म बंधन में चला जाता है. मतलब he starts getting exploited by Maya. He has to क्या नाम है, he starts accumulating the karm phal and he accumulates, and according to his desire, according to his karmas, he gets another body. Supreme Lord is only the observer. But as soon as he turns his attention towards the super soul, his salvation starts. Salvation starts. This is the purpose here. And what Lord is saying here to Arjun to extort, you see, if you kill these people, they were pious to begin with, just like Ajamil. They were pious, but they got diverted from their path. They went from dharmic path to they went to adharm. उन्होंने अधर्म का साथ देना शुरू कर दिया. Whether he was Bhishma Pitama or Dronacharya, they somehow they got bewildered and went towards adharma. So now you will be doing them a service. If you kill them, they are all they will die in the battlefield and they will obtain an eternal life. This is also one of the purposes of his telling him. There is no destruction, for him. And this is also a thing for the common man also. Do not worry that you are going to die. You are eternal. In any case, whether you get a dog's life or you become a tree or you become, but you are not going to be finished off in this life. And it puts some sense into all of us. See, that is why this concept is very important for the survival of humanity. Then you will become kind. Then you will become really merciful towards others. Then you will not become exploitative because you will know that there are consequences. Yes. This is a very, very important text. The more you meditate on it, actually ये वाला very nicely you put. भाई you think जैसे आजकल का ना this very big, you live only once. That stupid philosophy that takes you self-destructive. So self-destructive because you are doing all sorts of sense gratification. I only have to live once, so let me just grab all the sense gratification. I will get only one life. I will get only life. But यहाँ पे तो कह दिया भगवान ने, उसके बाद तो you will be transferred to another body. Not only in this slok, in another sloks also. He will repeat this thing. Yantra Rudani Maya. This body is like a yantra. This is like a machine. He will give you a machine suitable for your desires. And you never know. Sometimes, in some sense, he fulfills your desire. But you can't ask कि भाई मुझे मतलब that he decides. He only knows which is the most suitable body for fulfilling your desire. yes. But once when he sees that you have surrendered to me, yes, then he gives you मतलब ऐसा लगता है. Yes. अभी देखो और he will further tell in the next slok. I can see it here.
The next shloka, he further very, very minute definition of soul. Abhi aap, you read it. Yes. There is nothing else. जी 23rd. जी नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. The soul can never be cut into pieces by any weapon, nor can he be burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. All kinds of weapons, swords, flames, rains, tornadoes, etc., are unable to kill the spirit soul. It appears that there were many kinds of weapons made of earth, water, air, ether, etc. In addition to the modern weapon of fire, even the nuclear weapon of the modern age are classified as fire weapons. But formerly, there were other weapons made of all different types of material elements. Firearms were counteracted by water weapons, which are now known to modern science. Nor do modern scientists have knowledge of tornado weapons. Nonetheless, the soul can never be cut into pieces nor annihilated by any number of weapons, regardless of scientific devices. Nor was it ever possible to cut the individual soul from the original soul. The Mayavadi, however, cannot describe how the individual soul evolved from ignorance and consequently became covered by illusory energy because they are atomic individual souls, Sanatana, eternally. They are prone to be covered by the illusory energy and thus they become separated from the association of the Supreme Lord, just as the spark of the fire. Although one in quality with the fire are prone to be extinguished when out of the fire. In the Varaha Puran, the living entities are described as separated parts and parcels of the Supreme. They are eternally so, according to Bhagavad Gita also. So, even after being liberated from illusion, the living entity remains a separate identity, as is evident from the teachings of the Lord to Arjuna. Arjun became liberated by the knowledge received from Krishna, but he never became one with Krishna. No, Prabhupada has brought many things here. Ji. But see, first of all, Lord had to tell the qualities of the soul, जो मैं पहले कह रहा था. It cannot be destroyed. It cannot be drowned. It cannot be burnt. It cannot be. So he brought all that clear power and all that. Cannot burn it. Cannot. Prabhupada has also tried to establish. He has so told about the eternity of the soul. He has gone into that we are parts and parcel of the Supreme Lord, yet not in that sense. We are individual souls. And that individuality जो है ना, वो जरा थोड़ा सा अभी मुझे भी clarity नहीं है. Because you see, when the body transference is there, it seems that we do take this our subtle body with us. मन बुद्धि अहंकार जो है ना, माइंड, मन बुद्धि अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड false ego, that we take with us. That is the dangerous thing, you know. Unless till you have abandoned everything and totally surrendered, you cannot get an eternal body. Otherwise, the Lord will give you. So that is, but matlab Mahaprabhu has made it quite simple. He has, once you do bhakti, then you will get, as we will read that Chaturshloki Gita, na, things will become even more clear. That things are very simple also. Actually, it struck me, maybe not with this, but see, जैसे अभी ना, what do we have? We have senses, we have the soul, and we have this body, right? A body is a gift from the Lord, right? तो उस बॉडी में अब क्योंकि सेंसेस हैं, सेंसेस से प्लेजर और पेन भी होता रहता है, बट वी हैव टू एक्चुअली इग्नोर, मतलब वी हैव टू तितिक्षवा, उनको तितिक्षवा करते हुए, tolerating those senses, we have to look after the best interest of the soul.
पूरा सोल को वी हैव टू पुट इट ऑन द, उनको लॉर्ड की तरफ ही देखते रहे हम, ये बड़ा जरूरी है, अदरवाइज तो देखो ना, दिस विल अगर अगर कंटिन्यू। जितना भी हम लोगों ने ये फिलॉसफी पढ़ी है, इफ वी गो इनटू दैट, see why we got separated from the Lord. We ourselves wanted this independence. So the body created this yantra for us to ride on, so that you can enjoy the senses. What you want, you can do that in a regulated manner and still come back to Him. He has done a kind of benevolence. But I mean, he has to run this सृष्टि also ना. He can't be benevolent कि भाई आप अब बदमाशी करते ही चले जाए, मतलब like in नहीं, Christianity उनको go and उनको तो फिर और पनिशमेंट भी मिलता है, वो तो भगवान ने हाँ क्या है, हाँ, उनको तो उस तरह he के has डिजायर to, से फिर और वो पनिशमेंट, तो करते रहते फिर गॉड 80 मतलब 84 लाख योनियों में घुमाएंगे आपको, और आपको अपने मतलब यू विल गेट किल्ड कर में, योर बॉडी नहीं, विल। जैसे उसका तो एक्सट्रीम एग्जांपल, जैसे मैं आई एम लिसनिंग दीस डेज, भाई भीष्म पितामह, ही वाज अ डिवोटी, बट बिकॉज ही वाज ऑन द पाथ ऑफ अधर्मा, तो देन लॉर्ड मेड इट एन एग्जांपल कि भाई इवन इफ यू आर अ डिवोटी बट वर्च्यू कैन नॉट बी डिफीटेड, हाँ, he dharma had can to never lie be down on the defeated, bed of arrows. then he had to lie on the bed of Bed arrows. of arrows. But then Lord Krishna went to उनका उद्धार भी किया, he went हाँ, on to meet him at the time of his death so that he can come because he was a devotee. because he did recognize him as a devotee. Next one. अभी तुम्हारे को पढ़ना है? हाँ, मेरे को, yes. नहीं, अच्छे 24, text 24. अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अखिलेद्यो शोषिया एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् आचालो यम सनातनः. This individual soul is unbreakable and insoluble and can be neither burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. Purport. All these qualifications of the atomic soul definitely prove that the individual soul is eternally the atomic particle of the spirit whole, and he remains the same atom eternally without change. The theory of monism is very difficult to apply in this case because the individual soul is never expected to become one homogeneously. After liberation from material contamination, the atomic soul may prefer to remain as a spiritual spark in the effulgent rays of the Supreme Personality of Godhead. But the intelligent souls enter into the spiritual planets to associate with the Personality of Godhead. The word Sarvagata, all pervading, is significant because there is no doubt that living entities are all over God's creation. They live on the land, in the water, in the air, within the earth, and even within fire. The belief that they are sterilized in fire is not acceptable because it is clearly stated here that the soul cannot be burned by fire. Therefore, there is no doubt that there are living entities also in the sun planet with suitable bodies to live there. If the sun globe is uninhabited, then the word sarvagata, living everywhere, becomes meaningless. इसका ये बहुत important है. ये actually Srila Prabhupada gave other examples also, like for instance, I think there is some sort of, I think poppy seeds, उसको अगर it's kind of poisonous, I think, for us if it's not processed. But so for us, we cannot consume it, but there are still microbes, small living entities that exist, that survive in that. So Srila Prabhupada said, कि भाई, just because we don't understand, we cannot live there, that does not mean living entities are not there. And this is very nice that he said, कि भाई, the soul is almost it is indestructible, unbreakable, can't be burned, can't be drowned. So मतलब the soul can survive anywhere, and it is everywhere. वो तो अब क्लैरिटी है कि देयर आर पीपल लिविंग ऑन द सन प्लैनेट हु हैव ए सुटेबल बॉडी फॉर दैट काइंड ऑफ प्लैनेट. ये तो दैट, अब इतना तो मतलब यस, Yes. because the nature and qualities of soul are
so minutely defined in Bhagavad Gita कि it is Yes. totally comprehensive. Yes. Totally comprehensive. इसीलिए if at least for me, if a scientist make any claims about life, they are number one incomplete because they themselves cannot create life. Number two, they do not know in what conditions soul can exist, living bodies can exist. They don't know. They simply do not know. So therefore, we cannot take their account. Yes, they may know on earth what can survive. Yes, they know humans where they can survive. Oh, bhai, but what about the 8.4 million species that are out there? But you have got eyes, material eyes, which can see a certain thing. You do not know, I mean, you don't have the eyes to see what life is there on other planet. You just don't have those kind of eyes or senses. You have been given a particular kind of body with a particular set of senses. Even on this planet itself, there are species whose body we do not fully understand. We do not understand our own body itself. Our own body. Yes. How otherwise, had they understood, then they would have सबको इलाज नहीं मरे ही ना फिर. हाँ, then nobody should die. Then you continue. 25. 25. Papa, you will read. Ah, yes, I will read. Avakto yam achinto yam avikaryo yam uchyate tasmad evam viditvainam nanu sochitam arhasi. It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. As described previously, the magnitude of soul is so small for our material calculation that he cannot be seen even by the most powerful microscope. Therefore, he is invisible. As far as soul's existence is concerned, no one can establish his existence experimentally beyond the proof of Shruti or Vedic wisdom. We have to accept this truth because there is no other source of understanding the existence of soul, although it is a fact by perception. There are many things we have to accept solely on grounds of superior authority. No one can deny the existence of his father based upon the authority of his mother. There is no source of understanding the identity of father except by the authority of the mother. Similarly, there is no source of understanding the soul except by studying the Vedas. In other words, the soul is inconceivable by human experimental knowledge. The soul is consciousness, and conscious, that also is a statement of Veda, and we have to accept that. Unlike the bodily changes, there is no change in the soul, and eternally unchangeable, the soul remains atomic in comparison to the infinite Supreme Soul. The Supreme Soul is infinite, and the atomic soul is infinitesimal. Therefore, the infinitesimal soul, being unchangeable, can never become equal to the infinite soul or the Supreme Personality of Godhead. This concept is repeated in the Vedas in different ways just to confirm the stability of the conception of the soul. Repetition of something is necessary in order that we understand the matter thoroughly without error. बताइए प्रभुपाद जी, वो मतलब so many things he is telling here which is beyond the scope of shlokas, just so that we understand. He is establishing in the purport the difference between infinitesimal soul and the infinitesimal soul and vastness of the super soul. उनका जो infinite extent है, वो उसके बीच में difference बता रहे हैं, that
यू कैनॉट बी इक्वल। कोई आदमी अपने आप को कहे मैं गॉड हूं, तो फिर वो दैट इज फुलिश। यू सी, दैट इज व्हाट आल्सो ही इज ट्राइंग टू टेल हियर। The main thing is कि क्या नाम है, the soul is invisible because we know it to be very very small, he says. And the existence of soul you have to accept, because this is what is coming from these scriptures. जैसे तुम इसमें कहते एक नहीं हो और कि चीज this is the definition of the soul. एक चीज इसमें और ये बहुत ही जो which I thought was very important is acceptance of the Vedic Shastra, the Mahajan as the authority. When the Vedic Shastras are saying this is the definition of the soul, that is, we have to accept it. Otherwise, you cannot make progress in spirituality. And you cannot, जैसे भी कहा ना, it cannot be this, you cannot verify this beyond through your material. जैसे ना, no one can establish his existence experimentally beyond the proof of Shruti or Vedic wisdom. You cannot establish जैसे कि ये सारी चीजें by experimentally, right? So, but you have to accept it as Vedic wisdom. But once you accept it, you start acting according to it, then you will get the same benefit. Like 1 plus 1 is equal to 2. You cannot question why is 1 plus 1 equal to 2? Why not 3? Why not 4? If you accept 1 plus 1 equal to 2, then you can start go further. building maths on it. You can start building trigonometry. You can start building calculus. You can start building upon it. You cannot, once you stop questioning that, then you can build upon it. So that part I can see it is very, very scientific. Like you have to accept these basic truths. As Bhishma Pitama said, that this Lord Krishna who is amongst us is the Supreme Personality of Godhead. He is a Mahajan, so you have to accept it. अब यू कैन नॉट क्वेश्चन इट, यू कैन नॉट, जैसे कि उस दिन डिस्कशन हो रहा था, यू कैन नॉट गो ऑन डिस्कसिंग कि भाई इज विष्णु बिगर, शिव इज बिगर, ब्रह्मा, विष्णु ब्रह्मा महेश, नो नो, because a Mahajan has said it, Vedic wisdom has said it repeatedly, Govindamadi Purusham, that is Lord Brahma saying it. ये here Mahajan is saying, so you have to accept it. ये मुझे इसमें बड़ा पावरफुल लगता है. ये हमारे एक्चुअली इस्कॉन की क्या है, एक्चुअली दैट इज द बेसिस ऑफ आवर वैदिक कल्चर, जो हम लोग का लॉस्ट हो गया है. That basis of our culture has been lost because of this scientific endeavor. Actually तो ये even यूरोप वगैरह में भी था 18th century में, साइंस के एडवेंट से पहले they were very very deeply religious and accepting of this. Faith was far more important than the experimentally proving things. अथॉरिटी की जो ये मतलब अथॉरिटी बीइंग सैक्रोसैंक्ट, ये ह्यूमन नेचर भी है. अभी आप देखो ना, जैसे तुम और हम लोग सब लोग ये कहते हैं भाई पिताजी ऐसे कहते थे, जब ऐसे कहते थे, वो ऐसे कहा करते थे. क्यों कहते हैं भाई? बिकॉज वी एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी. इन सम वेज वी एक्सेप्ट his authority. We accepted his authority at that time, and it remains even after he is gone. तुम लोग ये मतलब, I think you feel it that way, no? Yeah. Why do we idolize our parents? After all, they were also human beings only. But then you start realizing कि भाई, after all, I have survived till today. मतलब there is something great despite all his shortcomings. बट येट यू रिमेंबर हिम और योर पेरेंट्स. वो वही हाल ये यहाँ पे अथॉरिटीज का है, महाजन का है. वाई वुड दे कर, मैं मतलब उनको क्या पड़ी हुई है इतने बड़े बड़े लिटरेचर व्यासदेव जी को लिखने की, है ना? प्रभुपाद को इतनी मोटी मोटी किताबें. यार एक आपको कह दिया जाए श्लोक पे, भैया आपने पढ़ लिया बहुत, अब इस पे एक परपोर्ट लिख डालो आप एक. अभी आपको क्या इतना होने के बावजूद भी आपको लग जाएगा पूरा दिन आपको एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ बनाने में. और उन्होंने जिन्होंने की, मतलब हम लोगों ने अभी थोड़ा सा ही स्टडी किया है, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन द श्लोका एंड ब्रिंग everything, keeping the audience in mind. He had the English speaking audience in mind.
he had that in mind कि भाई मतलब, so that is why such exalted personalities, if they are saying something, we need to take them seriously, Hmm. because वो फिर otherwise तो ये it is, yes, You will not get the full benefit. You will not get the, then you will not yes, get the, you have, if you accept these things, then you will get the full benefit of it. Hmm. 26. हाँ, मौसी आप जी पढ़ेंगे? जी। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं नैनम, शोधुर्महर्षि। अच्छा, ट्रांसलेशन। If, however, you think that the soul is perpetually born and always dies, still you have no reason to lament, O mighty armed. Acha. There is ये always देखो, हाँ, there is always a class of philosophers almost akin to the Buddhists who do not believe in the separate existence of the soul beyond the body. When when Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita, it appears that such philosophers existed and they were known as Loka Yatikash and uh, Vaibhasikas. Acha. These philosophers maintained that life symptoms or soul takes place at a certain mature condition of material combination. The modern material scientists and materialist philosophers also think similarly. According to them, the body is combination of physical elements. At a certain stage, the life symptoms develop by interaction of the physical and chemical elements. The science of anthropology is based on this philosophy. Currently, many pseudo religions now become fashionable in America and also adhering to this philosophy, as well as to the nihilistic, non-devotional Buddhist sects. Even if Arjuna did not believe in the existence of the soul, as in the Vaibhasika philosophy, there would still have been no cause for lamentation. No one laments the loss of a certain bulk of chemicals and stops discharging his prescribed duty. On the other hand, in modern science and scientific warfare, so many tons of chemicals are wasted for achieving victory over the enemy. According to the Vaibhasika philosophy, the so-called soul of Atma vanishes along with the deterioration of the body. So, in any case, whether Arjun accepted the Vedic conclusion that there is an atomic soul or whether he did not believe in the existence of the soul, he had no reason to lament. According to this theory, since there are so many living entities generating out of matter every moment, and so many of them are being vanquished every moment, there is no need to grieve for such an incidence. However, since he was not risking rebirth of the soul, Arjuna had no reason to be afraid of being affected with sinful reactions due to his killing his grandfather and teacher. But at the same time, Krishna sarcastically address Arjuna as Mahabahu, mighty arm, because he at least did not accept the theory of Vaibhasikas, which leaves aside the Vedic wisdom. As a Kshatri, Arjun belonged to the Vedic culture and it behooved him to continue to follow its principles. भाई प्रभुपाद जी ने यहाँ पर जो है ना, मतलब श्री कृष्ण ने जी उन्होंने कहा कि भाई अगर इफ यू डू नॉट इवन बिलीव इन द एटर्निटी ऑफ द सोल, तो प्रभु ये हम्म तो बॉडी जो है कूड़ा करकट वैसे ही है, हाँ काय के लिए स्किल केयर कर रहे हो तुम, इसको करो बिल्कुल खत्म, खाली घर में हाँ और जाने कितनी पैदा हो रही हैं, और और बाई बाई मरना तो वेरियस है ही है जब कॉम्बिनेशन जन्म है। और पैदा हो रहे हैं, ये तो कूड़ा करकट है बॉडी, तो व्हाई डू हम्म यू लेबल, किल देम, क्या नाम है। बट हम्म एट द सेम टाइम उन्होंने कहा महाभाव करके एड्रेस किया, तो कहा भाई तू तो वैदिक कल्चर का पार्ट है, बट अगर तुम नहीं भी बिलीव करते हो, अगर तुम इसी में बिलीव करते हो, तो व्हाई डू यू डाइग्रेस फ्रॉम योर डूइंग योर ड्यूटी। जब ये शरीर साला बिल्कुल बेकार की चीज है, ये खत्म ही होने वाला है, इसका कोई एग्जिस्टेंस ना अभी है ना फ्यूचर में होगा, तो व्हाई हाँ व्हाई टू केयर। हम्म ऐसे ही बता रहे हैं मेरे ख्याल में। जी 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 बिल्कुल, जबकि आपको बिल्कुल आपको जब मरना तो है ही है भाई, वन डे यू विल डाई।
then what's the वो point of फैक्ट तो lamenting? It's आपके not आंखों like के सामने है ना, somebody, yeah, you will be whether there is soul or no soul, no soul, you have to when die. when the body Why do dies, you then it lament? becomes lifeless. Hmm. Yes. Then what's the It point stops of moving, it lamenting? stops eating, it stops touching. तो फिर कर्म है, मतलब वो तो कूड़ा करकट है, तो फिर है, जाके जलाओगे ही तो इसको। बिल्कुल Oh, yes. बिल्कुल। Hmm. Next one, हाँ 27. हाँ धीरे Jatasya एक hi. मिनट हाँ जी, हाँ हाँ, यस, Yes. एक सेंटेंस ये आया है कि हाँ देयर हाँ इज ऑलवेज ए क्लास ऑफ फिलोसफर्स almost akin to the Buddhist who do not Hmm. believe in the separate existence of the soul beyond the body. तो जी बुद्धिस्ट का मेन क्या मानते हैं ये लोग? Ahimsa. I think अहिंसा। यहाँ तो ahimsa, ये that no भाई violence. यहाँ पर ये कह रहे हैं, उनका ये है कि यू बिकम, मतलब यू बिकम एब्जॉर्ब विद आफ्टर दिस annihilation of this body, there is nothing beyond that. You ओके। get kind of absorbed in some kind of a vacuum. Brahma मतलब Jyoti you or are you kind of go, मतलब there is no existence of yours after this. एंड यहाँ पे जो वर्ड ये निहिलिस्ट वर्ड यूज किया, मेरे ख्याल में निहिलिस्ट का तो ये मतलब है दो तरह में, मतलब वांट टू एंजॉय, दे आर दे आर दे आर दे लव देयर बॉडी, दे as it is, and kind of want to enjoy like that, nihilist. जी। Those who admire themselves. हम्म। बिल्कुल जी। हाँ चलो भाई पढ़ो 27। 27। हाँ 27. Jatasya hi dhruvo mrityur janma mritasya cha tasmad apari haryerithe na tvam shochitum arhasi. One who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. Purport. One has to take birth according to one's activities of life, and after finishing one term of activities, one has to die to take birth for the next. In this way, one is going through one cycle of birth and death after another without liberation. This cycle of birth and death does not, however, support unnecessary murder, slaughter, and war. But at the same time, violence and war are inevitable factors in human society for keeping law and order. The Battle of Kurukshetra, being will of the Supreme, was an inevitable event, and to fight for the right cause is the duty of a Kshatriya. Why should he be afraid of or aggrieved at the death of his relatives, since he was discharging his proper duty? He did not deserve to break the law, thereby becoming subjected to the reactions of sinful acts, of which he was so afraid. By avoiding the discharge of his proper duty, he would not be able to stop the death of his relatives, and he would be degraded due to his selection of the wrong path of action. It's very important actually. ये जो ना, the at the same time, violence and war are inevitable factors in human society for keeping law and order. See, what I understand from that is, you see, this is uh, people, because of their independence. See, they are independent. It then at the country level also they want to be independent. So, wo fighting is inevitable. One country wants to fight with another country. One person wants to fight with another person. Rights and all this. तो इसलिए आपको तो you have to focus on the Lord. ये जो है ना, जैसे ये तो भाई, one who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. तो भैया ये साइकिल तो चल ही रहा है. तुम नहीं ड्यूटी करोगे तो भी तो ये लोग क्या, भीष्म पितामह तो मरेंगे ही. जैसे अब ये वॉर नहीं होगी तो वॉर, ये मुझे अच्छा लगा कि वॉर एंड वायलेंस इज इनएविटेबल. एक्चुअली वो हम लोग अभी वॉर एंड वायलेंस करने लग गए हैं, अनफॉर्चुनेटली फॉर सेल्फिश रीजंस. ये लोग तो वॉर एंड वायलेंस करते थे टू एस्टैब्लिश धर्म, टू एस्टैब्लिश, जैसे कि भाई वन पर्सन, एवरीबडी इज ट्रेन्ड इन वैदिक कल्चर. तो one person has one conclusion, another person has one conclusion, so they will come and fight. तो ऐसा मुझे लगा. भाई आप मैं मेरे को मालूम है, अभी जस्ट नाउ आई एम थिंकिंग इन वेरी, मतलब समथिंग, आप सोचो
ये दोनों वॉरिंग फैक्शन दोनों आमने सामने खड़े क्यों हैं? व्हाई आर दे देयर इन फ्रंट ऑफ? एक्चुअली ये है उनके सेंस एंजॉयमेंट की वजह से। सेंसेस को अपने दोनों साइड एंजॉय करना है। एक साइड जो है धर्म की साइड में है, और दूसरे साइड में क्या नाम है, मतलब वो अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए उन्होंने अधर्मी हो गए हैं वो, है ना। अब जो है तो फिर ये वॉर इनेविटेबल हो गई है धर्म की स्थापना के लिए। मतलब आपको फिर ड्यूटी करने के अलावा आपका वायलेंस करके ही वो क्या नाम है चीज एस्टेब्लिश हो सकती है। यू कैन डू योर ड्यूटी ओनली बाय फाइटिंग। दैट इज व्हाई यू हैव टू फाइट। अदरवाइज ये नहीं है कि आप जो है, ये नहीं है कि भाई आप जानवरों को मार मार करके हिंसा करें। हिंसा इज नॉट परमिटेड either on your body nor on the body of another being cause। बट इस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए वायलेंस नेसेसरी क्यों होता है? बिकॉज सारे इंडिविजुअल्स जो है ना वो सेंस कंट्रोल्ड है, तो वो तो इससे करेंगे, वो तो उल्टी सीधी चीजें करेंगे ही। इसलिए किंग हैज टू बी ऑन द साइड ऑफ धर्मा। द कीपर ऑफ द धर्म यूज्ड टू बी द किंग, एंड अपॉइंटेड क्या नाम है जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, दे वर एडमिनिस्टरिंग धर्मा। That is why the police and the prison and all these things were there, and till today they are there, because men are मतलब human beings are by nature sense gratifiers। sense gratifiers की वजह से वो लोग आए इसीलिए यहाँ पे। We have come here to do that, to fulfill our senses, to fulfill our desires. That's why we took birth. Otherwise, we would have gone to Vaikuntha. We want to satisfy our desire. इसीलिए वो ये सब ये टीचिंग भगवान को आके करनी पड़ी है कि भाई तुम धर्म का रास्ता पकड़ो, अपनी क्या नाम है ड्यूटी करो, काहे इन सब चक्करों में पड़े हुए हो? You see, why do you want to prolong this? Not only you are spoiling, क्योंकि ये तुम्हारा जो ये जो है सेंटेंस को काट के फिर से एक नई जेल में पहुंच जाओगे, इस जेल से ट्रांसफर होगे एक और नई जेल मिल जाएगी, तो इससे वर्स भी हो सकती है, उससे थोड़ा बेटर भी हो सकती है। Actually, so I see another thing what you just said. Usse it becomes very clear that the problem is we can see, all of us can see the system is failing. Slowly and slowly it is failing, but it is surely failing. System जैसे it is at the law and order is failing. It's actually, why is it failing? It is failing because, as you said, king or the people at the top are not in the side of dharma. Achha, why are they not at the top? People are not in dharma because they are not trained to be in such. Because none of us are trained in dharma. So therefore, it is really the blind leading the blind, and that is causing the system to fail slowly and slowly. भाई अभी देखो ना, वर्ल्ड में अगर इसको थोड़ा सा उस लेवल पे जो तुम्हारी तरह ही मतलब मानूं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। वन सिस्टम इज दैट ऑफ डेमोक्रेसी, and another system is that of totalitarian like communist China or Russia and all that, or the Islamic countries। अच्छा, अब दोनों में क्या देख रहे हो? राजा कौन है? राजा जो है डेमोक्रेसी में पार्टीजान है। पार्टीजान है वो क्या नाम है, या तो एक्सट्रीमली लिबरल है, या फिर राइट विंग वाला है, या इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, या वो क्या नाम है मतलब वो कोई कास्ट को प्रमोट कर रहा है। इस टाइप के राजा आपके हैं, आप समझ गए? या महाकरप्ट हैं। यू सी, डेमोक्रेसी में तो वो इलेक्ट होके आ गए फ्री भी बांट के, और अपने वोट बैंक को केटर कर रहे हैं। वो धर्म का उनसे कोई लेना देना नहीं। तो डेमोक्रेसी का टोटलिटेरियन में, कम्युनिज्म में क्या है कि वो एक सेट ऑफ पीपल दे थिंक दैट दे आर राइट, दे नो द बेस्ट पावर में। अब वो जो है वो अपनी डॉक्ट्रिन को सबके ऊपर थोप रहे हैं। जैसे अब वो वहां पे, और इस्लामिक कंट्रीज में क्या है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर फेथ डेवलप कर लिया, उसके हिसाब से वो सबके ऊपर थोप रहे हैं। पीपल दे आर कन्वर्टिंग एवरी, मतलब उनके वहां पे अब टोटल यूनिफॉर्मिटी है, शरिया कानून है। आपने गलती से भी चोरी कर ली तो आपका जुर्म है, वो हाथ काट देंगे आपका। ठीक है ना? तो ये उनका है भाई, वो ये दिस इज देयर। तो यू सी, दिस इज हाउ द होल वर्ल्ड का जो राजा जो है ना वही गड़बड़ हो गया है। और ऐसे में आपको जो भगवान भी जो कह रहे हैं ना
या जो जो निकल के आ रहा है कि भैया ज्यादा इस समाज सुधार के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़ो, बिल्कुल। नो, बिल्कुल भी मत नो, पड़ो, और अपने को नो, देखो कि हम कैसे चुपचाप मतलब ये इस चीज को करके निकल लें। यू फॉलो बिल्कुल। कृष्णा दूसरे को कॉन्शियसनेस। अपना ना तो थिंकिंग सोचो, ना ही उसके हम्म, कल्याण के बारे में बहुत ज्यादा सोचो आप। हालांकि प्रभुपाद जी ने ट्राई टू अभी बी कुछ फोकस श्लोक ऑन पहले बी उन्होंने कृष्णा कहा है। कॉन्शियस। हैं? वो आई थिंक हम लोगों के लिए फोकस ऑन बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, वो बस अपने आप वो भगवान करा देंगे, जिसका जिससे कल्याण जिसका कराना होगा कल्याण वो करवाना भगवान चाहते करा हैं देंगे, तुम्हारे थ्रू, उसका वो करवा करा दो। देंगे। तो हम्म, दैट इज हिज बिजनेस। हमें तो अपने हमें आप को अपना काम कृष्णा करना है। कॉन्शियस बनाना है। वी हैव टू बिकम बिल्कुल। कृष्णा कॉन्शियस। बस फॉर मी, दैट्स फॉर अस। ठीक है, हम्म। हम बाकी लोगों को जैसे बता देते हैं, भाई ये लो, ये पढ़ लो, हाँ भाई ये हो रहा है, इतने बजे कर रहे हैं हम, आ जाओ नहीं इतने बजे कर रहे हैं, आ जाओ पढ़ लो। जीजा जी, इसमें बस हम लोग को माइन्यूटली एक बात ये देखनी है कि कौन सी चीजें हम ऐसी कर रहे हैं जो बार बार हमको यहाँ फंसा रही, बस उनके लिए बहुत ज्यादा अवेयर हो जाना है। अब वो और जरा सा उन्हीं थोड़ा हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट कोशिश तो चीज कर को रहे हैं भाई, कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। वही जो मैं कह रहा था, भगवान की तरफ देखते हैं, फिर हाँ वापस वो इसमें आ आना जाते जाना हैं। लगा हुआ है, आना जाना आना जाना, माया बट और वो इसके कम बीच में होता हम जा रहा लोग है। वो पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे हो रहे हैं। हाँ, बट कम भी होता जा रहा है, ये भी मैं कम देख होता रहा जा हूँ रहा कि है यार। यस। ज्यादा टाइम हम भगवान में लगाते जा रहे हैं, हमारी इच्छा भी ज्यादा टाइम भगवान में लग रही है। तो हम्म, एक्चुअली इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एक्चुअली हम्म, इट इज ग्रेजुअली, इसलिए कहा है। और बिल्कुल। जो हमने कुछ दिनों पहले की, भाई बाई बाई फोर्स, बाई रिपीटेडली डूइंग दिस, फोर्सिंग योर सेल्फ टू डू इट, तो ये भगवान की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, डेफिनेटली आई बिल्कुल। कैन से सी। हम्म। एक बार जी, बता दें, एक ये चीज जो मुझे हम और लोग, लगती है, हाँ हाँ जब ये जो चीजें जो प्रभुपाद जी हम लोग को बार बार रिपीट करके बता रहे हैं ना जी जी, जब ये एक बार हम अच्छी तरह से हमारे मन में बैठ जाएगी, तो इस संसार के लिए हमारे मन में कोई अट्रैक्शन भी नहीं रहेगा। हम ये समझ, हम्म। ये सिस्टम है, ये ऐसे ही वर्क करता है, एंड इट हम्म। विल ऑलवेज वर्क लाइक दिस ओनली। तो वी विल अंदर बिकम से चार्ट नहीं एब्सोल्युटली, फील होता हाँ हाँ, वी विल है ना नाइदर जी। लव लव इट और नॉर हेट इट। हम लोग बड़े मतलब मेरे को लगता है न्यूट्रल जैसे होकर के अपना जी चुपचाप जी। यस, ये जो की आप लाइफ दोनों कह रहे हैं, काटते हैं। यही व्हाट यू जस्ट बोथ सेड, लिबरेशन, दैट आई थिंक इज लिबरेशन। आपको मुक्ति मिल जाएगी इस संसार से, आप उलझना बंद कर देंगे। देन हम्म, आई थिंक यही मुझे लगता है कि वेरी नाइसली पुट, कि फिर हम लोग को इसमें इट विल नॉट होल्ड अट्रैक्शन, क्योंकि फिर हम्म, सेंसेस का ग्रेटिफिकेशन हम नहीं करेंगे बाहर बिल्कुल। के इस वर्ल्ड से। भाई हाँ, फिर तभी तो सेल्फ सेटिस्फाइड, तभी तो आप अपने अंदर, देन यू बिकम सेल्फ सेटिस्फाइड, बिल्कुल। धीर बन जाएंगे। यस, हम्म, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा हम्म, मौसी। यस। हाँ और कह रहे मैं यार, ये जो भागवतम पढ़ने का काम जो है ना, वो अगर आप करते रहोगे ना, चाहे नहीं नहीं, जैसे भी, चाहे यदि मतलब, करते रहोगे नहीं, करना ही है, हाँ हाँ यस। यस, यस, करना ही है। वेरी गुड यार, चलो थैंक जी यू, वेरी हम नाइस, लोग का नाम खत्म करते हैं, है ना? जी वेरी डिटरमिनेशन। जी ओके। जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीजा जी, मेरे मन में एक बात और आ रही, हाँ बताओ बताओ। हाँ पता है, इन झंझटों में पढ़ने, इन झंझटों में पढ़ना कि ब्रह्मा जी ज्यादा पावरफुल हैं, कि शंकर जी ज्यादा पावरफुल हैं, कि कौन ज्यादा पावरफुल है, हम इस बात पे ज्यादा कंसंट्रेट करें यदि, कि जो हमारे जैसे प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं, वो भगवान की चीजों को जो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो दीजिए जी हम अपने रोल पे ज्यादा कंसंट्रेट करें इन कंपैरिजन टू कि पावर कौन ज्यादा पावरफुल है, कोई भी ज्यादा पावरफुल है, हमें क्या करना, हमको जो बताया जा रहा है करने के लिए जी जी, हमको ऐसा लग रहा है कि हमें उस चीज पे कंसंट्रेट करें, मुझे ऐसा लगता है जी।
भाई देखो ना, आपको ये आप जैसे ना मैं फिर वो चतुर्श्लोकी गीता पे ही जाऊंगा। जी। आप जब ये कथा कथा पढ़ते रहोगे ना, हम्म। कथा का ये कहने में श्रवणम कीर्तनम करोगे ना, हम्म। जो ये महाजन चाहते हैं, जी। जो ये महाजन चाहते हैं ना, मतलब वो अपने आप से चाहते क्या, वो क्या चाहते हैं, मतलब कि दैट विल स्टार्ट हैपनिंग। फिर वो हम्म। आपको ये देर इज, मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं है, कौन बड़ा है कौन हम्म छोटा है, उसके अंदर में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है। ये हमारे बिल्कुल। खुद के बनाए हुए हैं। हाँ। हम्म क्योंकि हम लोग जो कुछ मतलब लोग जो है ना सेंस ग्रेटिफिकेशन लगे हो, तो उनको जो सूट हम्म कर रहा है वो उन्होंने हम्म। सिलेक्टिवली उसको बड़ा मान के रखा हुआ है। हम्म। हम्म क्योंकि क्योंकि उनसे मिल certain जाता। gods are convenient to them and certain gods हम्म are inconvenient to them। और हम्म हमारे क्या नाम हम्म है उसकी रिलीजन की ये बड़ी बात कि इट वाज रियली कैथोलिक इन द सेंस दैट इट परमिटेड सच थिंग्स। इट वाज हम्म। नॉट ए ऑटोक्रेटिक रिलीजन लाइक, मतलब जो भी है वो इस्लाम या इवन क्रिश्चियनिटी, उसके अंदर हम्म। में काफी कुछ इंटॉलरेंस है, हमारे वहाँ टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। हम्म। हम्म, यू सी सो, बिल्कुल। तो ये जो है ना इसके अंदर में, लेट अस नॉट बिकम एनवियस ऑफ दोज पीपल ऑल्सो हु आर, क्या नाम है, उनको करने दो आप, मतलब दे ऑल्सो ब्रिंग रिचनेस टू आवर डिस्कशन। नहीं नहीं जी जी, मैं हाँ, एक बात ये समझ रही हूँ कि हाँ क्या। अपने लिए, जी हम जी लोगों के अपने। लिए, अपने हम हाँ। लिए। लोगों के लिए, अपने जी। वो लिए। जो कृष्ण भगवान ने ना, मतलब पता नहीं अब तुम्हारे साथ वो जो कर्मयोग वाला वो श्लोक है ना, जो जिसके अंदर में कि ये चीज आई है कि भाई उनको डिस्टर्ब मत करो आप खुद अपने क्या नाम है उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे रहो बस चुपचाप। बिल्कुल। और अपने उनको पता भी नहीं चलेगा कि तुम कृष्णा कॉन्शियस हो, क्या नाम है। जी 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 जी। वो जो है वो सोचेंगे कि वो भी उस, तो आप भी उसी तरह की ड्यूटी कर रहे हो, आप भी वही जी। काम कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, वेर एज यू आर, तो आपका जो चित्त है वो लगा हुआ है भगवान में, भगवान और में लगा उनका हुआ। चित्त माया में लगा हुआ है। ये फर्क जी है। जी जी एक चीज और है। पता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि डेमोक्रेसी है या किसी और कंट्री में कुछ और है, तो इससे एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि इस पृथ्वी पर भी अगर एक्चुअल में सुधार लाना है, तो भगवत गीता के रूल जो परम ब्रह्म परमेश्वर ने बनाए हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करके आ सकता है। बिल्कुल, ये तो ये ये बिल्कुल मौसम क्लियर है बिल्कुल ये 100% है ये। ये है, लेकिन इसको यस 100%, क्योंकि ये है असली सनातन धर्म। हम्म। यस। टाइम इमेमोरियल व्हेन द सृष्टि वाज क्रिएटेड, दिस इज द हम्म। रिलीजन ऑफ, दिस इज द धर्म which has no English equivalent. हम्म। No, this is how the humans should act. हम्म। तो ये चीज तो, लेकिन वो मतलब या वो अब कलयुग अपना इट विल टेक इट्स, हम्म। तो डोंट बिल्कुल वरी, नेक्स्ट बिल्कुल। नेक्स्ट मिलेनियम आएगा सतयुग का, लाइक दैट इट विल हैपन, है ना। बिल्कुल जी बट जी वी हैव ए अपॉर्चुनिटी, दिस जी। यू, यस। वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, एंड हम्म। उसके लिए रोड मैप भगवान ने दिया है हमको, बिल्कुल। द फॉर्म ऑफ भगवत लेकिन गीता एंड एक चीज, भागवतम। वो वन थिंग आई विल कंक्लूड विद दिस कि जो मौसी आपने कहा ना कंट्रीज के लिए, वही हम्म। चीज फैमिलीज पे भी अप्लाई होती है। अभी जैसे हम्म। फैमिलीज भी काफी वो हो गई है ना, लेकिन हम्म। जैसे आपने जो कंट्री के लिए कहा वही फैमिली के लिए भी वो भी एप्लीकेबल है कि अब वही फैमिली भी हाँ, पीस, फैमिली भी पीस शांत तभी हो पाएगी जब भगवत गीता के इन प्रिंसिपल्स को लाएगी। बट हम अब सबको नहीं कर सकते, हम अपने को कर इवन सकते विद हैं, इन आवर अपने फैमिली से में भी आपको एग्जाम्पल वही प्रिंसिपल हम अपनाना अपने में है भैया। करके हम्म। इनसाइड, मतलब हम करना स्टार्ट करेंगे तो दैट्स और द एक बेस्ट वी बात कैन और डू। भी है, ये आप जब करना शुरू करेंगे ना, तो जो भी आपसे कनेक्टेड है या जो भी आपके नियर है, वो दे विल स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट, इसमें भी कोई doubt, 100%, कोई इसमें कोई डाउट नहीं डाउट है। नहीं है। हम्म। के ऊपर वो इवन यहाँ तक तो वो भी ये भी कहते, महाप्रभु ये भी कहते हैं कि वो जो आप जप या क्रम में भक्त कीर्तन करते हैं जोर जोर से, तो कीड़े मकोड़े हैं उनका कल्याण हो जाता है, हम्म। कल्याण हो जाता है। बर्ड्स का, द इंसेक्ट्स का, उनका भी कल्याण, इसीलिए वो तो कहते हैं अपने मन में नहीं करने का है, हम्म। जोर जोर से बोल के करने का है। हम्म। हम लास्ट में करते हैं ना, तो जी। ये नहीं अपने अगर मैं अपने आपने मन में कर लिया, नो, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। हम्म। श्रवणम कीर्तनम विष्णु,
श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो जब आप लाउडली बोलोगे तभी तो दूसरा सुनेगा। अभी ये वाला प्रिंसिपल है कि एक जना बोलेगा दूसरा जना फॉलो करेगा, एक जना बोलेगा तो दूसरा जना सुन रहा है ऑडियंस में, फिर दूसरा जना क्या नाम है, फिर जब दोबारा बोलेगा तो फिर वो सुनेगा, क्या नाम है, जब वो जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको सुनेगा बोलने वाला पहला। जी। राइट, है ना? हाँ जी। ओके जी। ऑलराइट ठीक है। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।